अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। Sorry for a few minutes of delay. We were supposed to start at 6 p.m. However, here I am. Alhamdulillah. Hope that everybody is fine and everybody is doing well. Insha Allah. आज का हमारा टॉपिक जो है एरन बिन सफिया के साथ वो है about homeschooling again. Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining in. And what about homeschooling? Well, it's become a very hot topic for everyone. And सब पूछ रहे हैं कि भाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. So I thought today we would just assume that we're starting it, right? We would just assume कि चलो ठीक है, हमने अपनी दुआएं मांग ली, अपने इस्तिखारे कर लिए और हमने सोच लिया कि जी हम होम स्कूलिंग करना चाह रहे हैं और definitely, but now we are like where to start, how to start it, right? And when we have to dismantle a few myths about homeschooling, कि जो homeschooling वाले लोग होते हैं ना वो perfect लोग होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि जी उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज कर लिया. बहुत पंक्चुअल होते हैं, बहुत टाइमली होते हैं और बहुत फोकस्ड होते हैं जो homeschooling वाले लोग होते हैं. I'm a homeschooler for the past 6 years. None of this is true, at least for me. Yes. होम स्कूलिंग में ये ज़रूर होता है कि आपके पास एक रिदम होता है, राइट? आपको पता चल जाता है कि आपकी रूटीन क्या है. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जब नई नई शादी होती है तो आपको पता नहीं होता कि रूटीन क्या होने वाली है, राइट? कुछ रूटीन आपकी आप अपने पेरेंट्स की जानते हो, आप अपनी रूटीन जानते हो जो कि मैरिड लाइफ से पहले होती है. लेकिन वंस यू गेट मैरिड एंड यू हैव अ पार्टनर देन थिंग्स चेंज. मिजाज, पसंद, नापसंद, आदत, you know, all of these things come into the mix and then you start a new routine. Homeschooling is no different than that because पहले स्कूलिंग की एक रूटीन बनी होती है और उसके बाद आप समझते हो कि हम होम स्कूल करना चाहते हैं. तो how can we do it? Can homeschooling be done only by teachers? Yes or no? अच्छा, I would really appreciate if you would send comments, but another thing with my Facebook is I do not see comments usually, and I see them after I've actually logged out. So let's see what happens. Abhi tak I haven't seen any comment on Khair. The beginnings, building bonds and boundaries, establishing solid foundations and relationships with our children. सबसे पहली बात, जब हम होम स्कूलिंग को शुरू करना चाहते हैं तो एक चीज़ एज अ पेरेंट जो हमें पता होती है कि ये हमारे बॉन्ड हमारे बच्चों के साथ है कैसा. इफ़ यू आर सो देयर आर ग्रुप्स ऑफ होम स्कूलिंग पीपल, द वंस दैट हैव नेवर सेंट देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. ठीक, आई थिंक दे आर द मोस्ट बेस्ट इंटरेस्टिंग ग्रुप. उसकी वजह ये है कि दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. दे आर गोइंग टू बी सेटिंग एवरीथिंग न्यू. द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू नो समथिंग आउटसाइड ऑफ द होम एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द होम और वो एक नया एक्सपीरियंस होगा ऑल टुगेदर. देन देयर आर पीपल लाइक myself and others who have sent their children to schools for a certain period of time और फिर उन्होंने decide किया कि no, we want to have a bit of a homeschooling experience. So what happens is if you are a newbie, if you are starting from early childhood, then homeschooling is going to be a beautiful experience for you because you are going to be the first teacher, the first setup of a schedule, of a routine and everything that's going to be coming on, right? And if you are a person who has sent their children to homeschool but not a teacher by profession, you're not a teacher by profession, what's going to happen is you're going to learn with your children. And both the experiences, though they are different from each other, but they both are easy to set up. They're not difficult to set up, right? The most important thing a father can do for his children is to love their mother, and the most important thing that a mother can do for her children is to love their father. Why did I read that? I read that because in majority of our families and our homes, a well-balanced home is one of the key successful elements for homeschooling success. ऐसा नहीं हो सकता कि आप एज अ पेरेंट होम स्कूलिंग सेटअप करना चाह रहे हैं और बाज़ औक़ात यही रीज़न है कि होम स्कूलिंग बहुत सक्सेसफुली सेटअप नहीं हो पाता क्योंकि दो पेरेंट्स हैं और वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में बच्चों को खींच रहे हैं एंड इट्स नॉट पॉसिबल that happens. So when you start this process, you have to be sure that you have the support of your spouse, whether it's a father who's wanting to start it or whether it's a mom who's wanting to start it.
We can improve our relationships with others by leaps and bounds if we become encouragers instead of critics. This was highlighted by Joyce Meyer. Primarily, we learn our parenting from our parents. We may not be consciously making notes, but unconsciously as we grow, we internalize, right? That is, we imbibe and absorb the way that our parents relate with us. Utilizing computing prelims, they were writing a default position program on our hard drive, which will be triggered by the right or the wrong. So we are subjugated to how our parenting was done. ये एक मेन एलिमेंट है. हम कैसे पेरेंट्स होते हैं, हम यूजुअली अनकॉन्शियसली वैसे ही पेरेंट्स होते हैं जैसे कि हमारी पेरेंटिंग हुई होती है. बट लेटर ऑन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी बिकम डिफरेंट इंडिविजुअल्स. हाउ बाय बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, बहुत सारी रीडिंग करते हैं. कोई भी इंसान एक बेहतर इंसान कैसे बनता है जब वो इस चीज़ को. अच्छा, इफ़ यू आर कमेंटिंग, आई कैन नॉट सी योर कमेंट्स एंड आई अपोलोजाइज फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट. कोई भी इंसान अपने लाइफ के एलिमेंट्स को लेके जब उसको change करना चाहे, unless until you have that mindset, you have that fire in you that you need to change something or something needs to be changed, no change is going to come. Why do we say that don't play the victim card? Why do we say that don't always be negative or passive about things? उसकी बहुत बड़ी वजह ये है. उसकी वजह ये है कि इंसान किसी हद तक अपने कंट्रोल अपने हालात और अपने मामलात को कंट्रोल कर सकता है. होम स्कूलिंग भी इसी तरह से है. वंस यू हैव मेड अ डिसीजन, यू हैव टू डू योर दुआस, यू हैव टू डू योर इस्तिखारास, एंड देन यू हैव टू से ओके नाउ लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह, एंड यू स्टार्ट विद रिसर्च. एंड रिसर्च नंबर 1 इज what do I need to be a homeschooler? And you will understand that you don't need degrees and you don't need teaching certifications and you don't need all of that to be a homeschooler. As our deen tells us, हमारा दीन हमें ये बताता है कि पहली चीज़ हम माँ की गोद है. अदब का जो है वो माँ की गोद है. आपका बच्चा पैदा होते साथ जैसे ही आपकी गोद में आता है, it's a mom's responsibility to start nourishing the child. और सबसे पहले nourishment में आता है जो Maslow's hierarchy of needs है. साइकोलॉजिकल नीड्स बेसिक है, बेसिक होती है साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब कि लव, प्रोटेक्शन, ये 2 चीज़ें हम अपने बच्चों को देते हैं. फिर साथ साथ हम अपने बच्चों को दीन की बात सिखाना शुरू करते हैं. बोलो ला इलाहा, बोलो बिस्मिल्लाह, बोलो अल्लाहु अकबर, इस तरह की हम चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं. फिर साथ साथ हम उनको बताते हैं कि ये आपके मामा हैं, ये बाबा हैं, ये बड़े भाई बहन वगैरह वगैरह. आप जनाब का फ़र्क बताते हैं. तुम तड़ाक से आप जनाब का भी फ़र्क बताते हैं. अम्मी अबू, बड़े अबू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. वी स्टार्ट टेलिंग देम. देन वो हमें बात करते हुए देखते हैं. आपके घर में किसी को एड्रेस करने का जो माहौल है, बच्चे उसी को पिकअप करते हैं. सही और गलत की तमीज़, सच और झूठ की तमीज़, ये सारी चीज़ें पहली बेस हैं, साइकोलॉजिकल बेस है. यही अदब है और यही होम स्कूलिंग का भी बेस है. बच्चा अपने घर के अंदर सिक्योर फील करे, बच्चा फील करे कि मेरी जो माँ जो अब टीचर का रोल ले रही है, शी विल अंडरस्टैंड मी एंड यू विल सी दिस. इट टेक्स टाइम. ओके, it takes time. If your child has been going to school और अब आप होम स्कूलिंग शुरू करो तो it will take time for your child to realize कि this is my teacher. It took me a lot of time. Actually, it took me months for my children to say, I used to say, Chalem, Bismillah, let's start. And when, oh yeah, mama, theek hai, dekhenge, acha ye. And then I had to actually sit down with them and I had to do family conferences with them. Like, listen, we're doing this. We are changing our roles for the day. It was not like a school system. It was not like desk laga ke baitho aur ye aur wo. Us pe bhi hum bahut jaldi aate hain. But it was telling that the roles are changing for a short period of time and that it is important to change that role. Why? Because the children, if they have been going to school, they see an outsider always as a teaching personality. They don't see the mother as a teacher. They don't see the father as a teacher. ये lecture तो दे सकते हैं हमें, लेकिन ये हमें teach कुछ नहीं कर सकते हैं. और जब आप homeschooling शुरू करते हैं और अगर बड़े बच्चों से शुरू कर रहे हैं, you have to talk to them. Conversation, communication is the key to any relationship. चाहे वो हमारा spousal relationship हो, चाहे वो हमारा parental relationship हो, चाहे वो हमारे friends हो, we need to communicate. We cannot assume कि बताए बगैर अपना रोल बच्चे समझ जाएंगे, बच्चे बात मान लेंगे. Unless until you have communicated, and not once, many times. Reputative communication is the key. You have to repeat
again and again, nicely, lecture के तौर पे नहीं, like this is what we are doing, this is how we are going to do, ये हमारा, और अपने बच्चों के साथ अपना मिशन और विजन शेयर करें. Communicate with them. So point number 1 is communication. Communicate with them कि आप homeschooling क्यों कर रहे हैं, उनका मशवरा लें इसमें कि वो क्या समझते हैं. और most probably 80% of the time they will say you're going to fail, ma, this is not something that you can do, right? But then you have to tell them the reasons. You have to lay out the reasons, that these are the reasons that I think that we should try homeschooling. You're not going to say indefinite period of time. You're going to say, let's give us a year. Let's give ourselves a year at least. Let's experiment with this. Will you be helping me to understand how we can grow together as a family, intellectually grow together as a family, emotionally grow together as a family? So because effective parenting is one of the key goals of relationships, right? And you are basically doing an effective parenting when you are taking them in, sitting down with them and actually discussing something. अब आप 3 साल के बच्चे के साथ डिस्कस नहीं करने लगे हो, जो बच्चा पहले कभी प्री स्कूल गया नहीं उसके साथ डिस्कस नहीं करने लगे हो, या जो बच्चा नर्सरी गया है उसको आप हल्का फुल्का सा समझाते जरूर हो कि अब से आपका स्कूल घर के अंदर ही है. मम्मा स्कूल घर के अंदर है, हाँ बेटा हम लोग पढ़ा भी करेंगे, खेला भी करेंगे, आप सारा टाइम मामा के साथ रहा करोगे तो हम इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे, you know, step by step. And if it's a 5th grader that you're going to homeschool, or if it's a 6th grader then you're going to homeschool, then the earlier conversation that I just had with you, that's what we are going to do. Rachel Carson, she says, if a child is to keep his inborn sense of wonder, he needs the companionship of at least one adult who can share it, rediscovering with him the joy, excitement, and mystery of the world we live in. This is the second point to how you can set the base of homeschooling, which is the joy of wonder. हर बच्चे में एक इनेट एक्साइटमेंट होती है, और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे हालात और वाक़यात हमारी एक्साइटमेंट को किल करते चले जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट बेस चेंज होता रहता है, राइट? लेकिन एक बच्चा जब पहली दफ़ा बर्ड देखता है तो आपने सोचा मामा बर्ड, मामा एंट, मामा बी, मामा दिस, मामा दैट. They're pointing out at things because it's not that they're just excited to see something, they're excited to live the experience of what they've been told. When we read to them storybooks, the children, when they're forming those characters in their head and when they're imagining those things, and when they see those characters or those things live, the spark connection happens. They say, oh, and it's a wonder, and their eyes open bright, and their tone pitch goes high, and you as a parent, you're pleased, mashallah. Most of us are very pleased with this experience जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे को कोई चीज़ देख के खुशी हुई है, right? And then unless until you're really busy in some housework and you say like अच्छा ठीक है, ये जो अच्छा ठीक है ना, ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा रूटीन है. हम इसे कोई इतना माइंड नहीं करते, लेकिन वो जो हमारा एक एक्सप्रेशन और ये जो हाथ झटकना है वो बच्चे के वंडर और जॉय को किल भी करता है. इतने में नाजुक नहीं होते बच्चे, फौरन नहीं किल करते थे, लेकिन एक छोटा सा क्रैक ज़रूर होता है कि यार मेरी बात में इंटरेस्ट ही नहीं लिया. होम स्कूलिंग आपको री एवेल्यूएट करना सिखाता है और आपको सिखाता है कि चाइल्ड की बात में इंटरेस्ट लें, चाइल्ड की वंडर में इंटरेस्ट लें, खुद दोबारा से उस वंडर को एक्सप्लोर करें, खुद दोबारा से उस लर्निंग एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करें. इस टॉपिक पे अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे डी स्कूलिंग की, क्योंकि बिकॉज वी केम फ्रॉम अ स्कूलिंग सिस्टम, वी केम फ्रॉम अ सिस्टम जहाँ पे हमें कहा गया बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ, पुट द फिंगर ऑन योर लिप्स, डू नॉट सी राइट, डू नॉट सी लेफ्ट, लुक ऑन योर पेपर, raise up your hand if you need to answer. अब क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, they are raising up their hands to answer, अगर उसमें से 5 बच्चों को नहीं आंसर आता तो वो तो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, बिकॉज they are embarrassed कि हम अटेम्प्ट करेंगे एंड we will be laughed at. और जो बाकी के जो हैं उनमें से ये होगा कि उनमें से टीचर कितनों से आंसर पूछ लेगी, राइट? तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू होता है, बच्चे हैंड रेज करना ही छोड़ देते हैं. You will realize that फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी, और अगर हमने भी फर्स्ट ग्रेड पढ़ा हुआ स्कूल में तो हमें पता होगी, we all used to raise hands. By the time we are in the 7th or 8th grade, the teacher actually has to say raise your hands and nobody budges. Then the teacher actually picks up a student and asks the answer whether that child knows the, और टीचर को पता होता है इस बच्चे को आंसर आएगा और इस बच्चे को आंसर नहीं आएगा. टीचर का भी एक assumption होता है और 80-90% of the time correct होता है. What happened?
Why did that happen? That happened because the joy of learning was killed, because the message that we gave across, and this is not a teacher's fault, this is a system that we have built for ourselves all around the world, right? This is a system that we've built. It's not a teacher's fault that the joy of giving the answer, of joy of exploring, is basically gone. The child does not care anymore because the child feels कि मेरी बात की तो कोई वक़्त ही नहीं है ना, तो मैं क्यों जवाब दूँ, कोई ज़रूरत नहीं, कोई और दे लेगा, कोई और दे लेगा. And that mentality continues into our life. मैं क्यों ये चीज़ करूँ, कोई और कर लेगा, मेरी तो कोई वक़्त ही नहीं है. That is the message that centers a person's life, unless until that person is a good doer, unless that person is somebody who takes charge in their hand, or if they're passionate about certain things. Everybody cannot be passionate about everything. Majority of you might not be passionate about homeschooling. I am passionate about homeschooling, and I'm speaking out to the sisters who are passionate about homeschooling, who are considering something like that. So point number two, number one was communication, number two was the joy of learning. You have to recreate that joy of learning within yourselves, ताकि आप अपने बच्चों को एक अच्छी direction दे सकें, ताकि वो consider करें कि wow, this is so much fun. Mama is fun. Like Mama listens to me. Mama understands me. We explore things. We understand things. Number three, you have to figure out your learning style. You have to do your homework. Basically, as a parent, this life is basically about doing homework. As a parent, you need to do your homework. You need to sit down and you have to understand. And do not give yourself मुझे तो गुस्सा ही बहुत ज़्यादा आ जाता है, मेरे तो घर के काम ही कभी ख़त्म नहीं होते हैं, पता नहीं मेरा तो चीखना चिल्लाना ही नहीं ख़त्म होता, तो मैं किस तरह से करूँगी. ये सारी चीज़ें you need to work on them. Unless until you're ready to work on them for the betterment of your children, you're going to keep telling yourself कि नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा, I won't be able to do this. If you have a lifestyle that you think you can change, or you are in control of changing, for example, you need to be able to block a few hours. अब वो few hours का मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे पूरे वो 4-5-6 घंटे टेबल चेयर पे बैठे रहेंगे इसलिए आपको वो hours block करने की ज़रूरत है. No, setting up a learning style and understanding कि मैं कौन सी methodology use करना चाहती हूँ. There are many methodologies out there. There is unschooling methodology. There is Charlotte Mason methodology. There is the classical methodology. There is Maria Montessori methodology. There is school unit methodology. There is school and house methodology. You have to figure out which one is it that is good for you. And I will tell you this right now. Majority of us are a mix of Charlotte Mason, eclectic, and sort of unschooling and classical. ये 3-4 चीज़ों का हम mix होते हैं, और ये जो 3-4 चीज़ों का mix है ना, ये कुछ अरसे के बाद आता है. Usually with the younger ones, with the really nursery ones, preschooler ones, you start with Maria Montessori style. You cannot adopt the whole complete Maria Montessori style because they do require some sort of training for you to understand how to take the child forward. But you can adopt Charlotte Mason methodology, and you can adopt unschooling methodology. इनको पढ़ें, इन चीज़ों को पढ़ें, देखें, समझें इनको, and then you can see. Then you have to know your boundaries. You have to know your boundaries. Boundary setup. वही जो मैं आपको बात कर रही थी कि you have to announce to everybody, listen, I'm doing homeschooling. I cannot afford that सुबह 10 बजे भी नाश्ते पे मेहमान आ रहे हैं, 12 बजे भी खाने पे लंच पे कुछ हो रहा है, और अगर इस तरह से हो रहा है, then what you have to do is you have to cater to that day. हमारे जहन में ये होता है कि पढ़ाई सिर्फ सुबह के आवर्स में हो सकती है, या सिर्फ इन्हीं आवर्स में हो सकती है. होम स्कूलिंग आपको फ्रीडम देता है कि आप अपने स्केड्यूल को, अपनी लर्निंग टाइम को मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में शिफ्ट कर सकते हो based on your situation. But there needs to be a structure. That shifting happens only when there is a dire situation, right? When there's a dire situation, तब आप अपने schedule को shift करते हो, but it is shiftable. However, there has to be a structure because younger children love structure and thrive on structure. बच्चों को पसंद है, not the अथॉरिटेरियन पेरेंट नहीं. पेरेंटिंग के भी स्टाइल्स होते हैं, राइट? अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग नहीं पसंद होती बच्चों को, और वो अच्छी भी नहीं होती उनके लिए, लेकिन अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग. नाउ व्हाट इज एन अथॉरिटेटिव, where the parent is in charge and they can actually lead the children throughout the day or throughout the situation, because बच्चे की innate ability होती है, और ये उनकी basic psychological need है
कि उनका जो बड़ा है, जो उनका बुजुर्ग है, वो उनको लीड करे और एक अच्छे तरीके से लीड करे. फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन हु आर मोर एंग्जाइटी प्रोन, जिनको बहुत जल्दी एंग्जाइटी हो जाती है, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, या बहुत जल्दी वो लगता बज़ाहिर ये है कि वो बच्चा फंस कर रहा है, लेकिन वो बच्चा फंस नहीं कर रहा होता. साइकोलॉजिकली उस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है ये जानने की कि दैट चाइल्ड इज़ सेफ, right? That child is safe. So if in an authoritative parenting style, you're able to give that safety assurance to your child, you're able to give that structure assurance to your child. Love and compassion, of course, you have that love and compassion, and that's why you're starting your homeschooling. So आपने अपना style देख लेना, आपने अपना learning style देख लेना, and then you have to go. Number 3 about yourself is you have to overcome your limiting beliefs. That मैं ये कर ही नहीं सकती, क्या नहीं कर सकते. Write down those things that you think you cannot do. Look at them hard and long and understand that is this something that you have created within yourself कि I won't be able to do this. मैं इतने बजे तक मैं उठ ही नहीं सकती, या मैं इतने बजे तक ये काम कर ही नहीं सकती. Of course, कोई भी चीज़ पहली दफ़ा करने के लिए it's just like as if a baby. You're going to understand, to learn how, and you're going to make that happen as a new homeschooler, home educator. You're going to try, and you're not going to succeed in the first go. Nobody succeeds in the first go. और success का merit क्या है आपके ज़हन में? As mothers हम बहुत hard होते हैं अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा, या फिर हम बहुत ही lax हो जाते हैं. हमारी 2 extremes हैं, या हम बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ छाड़ देती हैं, या हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में ओवर सेंसिटिव, ओवर थॉटफुल हो जाते हैं कि ओ माय गॉड ये भी होना जरूरी था, और ये भी होना जरूरी था, और ये नहीं हुआ, और ये नहीं हुआ, और ये नहीं हुआ, बिकॉज ये नहीं हुआ, सो आई एम अ फेलियर. This is the most common misconception that we women as mothers give to ourselves. As a mother, I'm a failure because I was not able to achieve X, Y, Z, because somebody else is achieving A, B, C, D until Z. Now listen, everybody has different circumstances. हर बंदे का circumstance different है, हर बंदे का सोचने का style different है, हर बंदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक innate ability दी हुई है, और उस innate ability के मुताबिक कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं और कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते. तो हम उन चीज़ों, और मैं हमेशा ये बात करती हूँ, इंसान कितना अजीब है कि हमेशा उस चीज़ के पीछे भागता है जो उसको पता है कि शायद ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा अनअटेनेबल है. इंसान हमेशा उन लोगों को खुश करने के पीछे और उन लोगों को सेटिस्फाई करने के पीछे भागता है जिसको पता है कि जो भी मैं कर लूँ इन्होंने मुझसे नाराज़ ही रहना है, या इन्होंने मेरी किसी बात में मेन में निकाल ही लेनी है. इंसान हमेशा उन सिचुएशंस को खोजने की कोशिश करता है जिसमें उसे लगेगा कि कोई और उसे आके प्रेज़ करेगा. सबसे पहला प्रेज़ अपने लिए ख़ुद अपने अंदर क्रिएट करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना सेंटर रखें, और इस चीज़ को सोचना छोड़ दें कि फ़लाना 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 मेरे बारे में क्या कहेगा, और वो मुझसे पूछेंगे आके कि भाई तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम ये कर सकती हो. मी एज अ पेरेंट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला gave me, gifted me with parenthood and enabled me to be the first darasgah of my children. I understand that. तुम कौन सी बहुत मतलब एजुकेटेड हो, क्या डिग्री है तुम्हारे पास, या तुम्हारा मतलब लाइफस्टाइल तो तुम देखो, तुम कैसे कर सकती हो. मैं कर सकती हूँ. यू हैव टू ओवरकम दैट. मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन सोच सकती हूँ, जान सकती हूँ. मुझे मेरे बच्चों के प्रेजेंट की भी फिक्र है, और मुझे मेरे बच्चों के फ्यूचर की भी फिक्र है. मैं अपने बच्चों को एक बेहतरीन इंसान बनाना चाहती हूँ. उसके लिए मुझे किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है. कोई तरबियत देने के लिए किसी भी माँ को, मैं समझती हूँ कि इंतहाई जिस माँ को लिखना नहीं ना आता, इवन दैट पर्सन कैन होम स्कूल. एंड दिस इज नॉट मी सेइंग, दिस इज रिसर्च सेइंग इट. खैर, coming back to the point, once you have overcome your limiting beliefs, once you have learned what homeschooling style it is that you want to venture in, मैं पहला word use करी हूँ, venture in. Please do not go in with this mind thinking ये जो मैंने सोच लिया अगर ये नहीं होगा तो then I failed and then I have to leave this. No, it took me 1.5 years as a homeschooler, and I have gone through teacher training, and I'm a teacher by profession, but at that point I was not. Actually, I enrolled myself into teaching, a B.Ed teaching after I started homeschooling journey, and the whole reason for that was because I wanted to learn how to teach, right? However, when this was 6 years ago, and when I started that, I was just like an undergrad mom. I took an undergrad in some other degree, and I was like, नहीं मुझे ये करना है, मैंने ये करना है, और मैंने ये शुरू किया.
और उसके साथ मैंने शुरू किया नहीं मुझे पता भी होना चाहिए कि कैसे करना। और उससे पहले मैं एक प्री स्कूल में 2 साल पढ़ा भी चुकी थी नर्सरी चिल्ड्रन को। बट द थिंग वाज my children didn't stop learning for those years when I was learning how to be a teacher. They did not stop learning. In fact, actually, a lot of learning happened for me while they were learning as well. This is just my story. I'm not saying that you should be enrolled in courses while they're learning, but I'm just saying that I learned firsthand that you do not need to have a degree in teaching, because Allah subhanahu wa ta'ala, when He chose us to become parents, we're instant teachers anyways. We just need to be good human beings to parent more wisely. I'll repeat this again. We women or mothers need to be better human beings, good human beings who are actively working towards becoming better human beings. हम अपने आप को निखारने पे टाइम लगाएं, सिर्फ अपने आउटलुक को नहीं, अपने इन लुक को, अपने दिल को, अपने ईमान को, अपने कैरेक्टर को, अपनी नेगेटिव थॉट्स को, अपनी सेट एंड बैड हैबिट्स को चेंज करते रहें, कंटिन्यूअली चेंज करते रहें, ताकि हम एक बेटर मेंटर बन सकें, हम अपने बच्चों को मेंटरशिप दे सकें। बच्चों को क्या नहीं मिलता आजकल? बच्चों को पॉजिटिव मेंटरशिप नहीं मिलती है। बच्चे अक्सर हमें नहीं बताएंगे। हमने क्या अपने पेरेंट्स को कहा था कभी इस एज में, जिस एज में हमारे बच्चे हैं, कि आप मेरे मेंटर हैं, मैं आपको लुकअप करती हूँ? कौन सा बच्चा जाके अपने पेरेंट्स को उस एज में ये कहता है? वो तो जब खुद पेरेंट्स बनते हैं तो दे रियलाइज कि ओ हमारी पेरेंटिंग कैसे हुई थी, या हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या कुछ किया, राइट? Mentors, जब बच्चे छोटे होते हैं, they need younger people, they need their cousins who are elder than them, they need their class teachers who they might see as their mentors. But the real mentor is at home. The real mentor is at home, and that is you, and that is I, and that is their fathers and their grandparents, etc. Okay. We've done that. A mother's lap is the first. So talk to them, make dua often, make a goal, attach your heart and their hearts to the Quran, toys and crafts. When they're in early childhood, then again, most of it is basically toys, crafts, playing, structured, unstructured playtime. When they're in a higher classes, then of course, like I said, find out your methodology. Start with reading aloud a lot of books. Start with book reading. Start with finding resources online, offline, that help cater their curiosity. That will be another lecture. And if you're willing to understand the methodologies, then please let the admins know, and we will do another live about methodologies and setup of how it's supposed to be set up, of the schedule. I'm not giving you out the schedule at this point. I'm just trying to dismantle this whole idea कि homeschooling जो है वो special किस्म के लोग होते हैं, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई special इस्तिताअत दी होती है, वही कर सकते हैं, आम बंदा नहीं कर सकता. This whole life was about that you yourself right now watching, or later who would be watching, is perfectly able to homeschool your children regardless what degree you have. And if somebody laughs at you and says, oh, तुम्हें किसने ये दे दिया राइट कि तुम होम स्कूलर बन जाओ, या कैसे, या क्यों, या अपने आप को शायद maybe you're deluded, you really need to see what the reality at base is, then listen to this reality. Allah subhanahu wa ta'ala gifted you with children and a home and probably security enough to be able to be your child's first darasgah, and that's what you're doing. And English is everything. Sabreen Rehan ne kaha English is everything. Jani, English is not everything. Allah is everything. और Allah subhanahu wa ta'ala ने कुरान भी इंग्लिश में नहीं उतारा था, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अरबी इज़ एवरीथिंग. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमें पुश किया गया ना कि इस सब्जेक्ट को पढ़ लोगे, और ये मोरालिटी में आ गया. अब ये मोरालिटी में आ गया कि अगर आपने इस सब्जेक्ट को सीख लिया, इस सब्जेक्ट को बोल लिया, तो इसका मतलब है कि आपको सब कुछ आ गया. यार आप वेस्ट में आ जाओ, बड़े बड़े आप इंग्लिश बोलने वाले जाहिल देख लोगे. एजुकेशन और जहालत का फ़र्क भी जाने. ज़ुबान जान लेना और टूटी फूटी बोल लेना, या स्लैंग उस ज़बान में बोल लेना, या फहश उस ज़बान में गालियां दे लेना, एजुकेशन नहीं है. एजुकेशन इखलाकियात है, एजुकेशन तहजीब है, एजुकेशन आपने लाइफ कैसे गुजारनी है उसका मॉडल है.
एजुकेशन कुरान से है, एजुकेशन सुन्ना को जानने से, एजुकेशन अपने आप को समझना है। उसके बाद फिर हम लोग रट्टू तोतों की तरह जो कुछ भी रटते हैं अपनी लाइफ में, वो एक अलग सिस्टम है। और होम स्कूलिंग है ही इसलिए कि हम इस कॉन्सेप्ट को डिसमैंटल कर सकें, ख़त्म कर सकें कि एजुकेशन सिर्फ किताब को रट के एग्ज़ाम में नंबर लेके हासिल हो जाएगी। होम स्कूलिंग इसलिए है कि बच्चों को इल्म सीखने से हुब पैदा हो सके, उनको पता हो कि लर्निंग इज़ फॉर लाइफ। इल्म सीखना समझना पूरी ज़िंदगी के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 जमातें पढ़ ली और उसके बाद आप ख़त्म हो गए। इल्म आपके कैरेक्टर को डेवलप करने का एक नाम है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने किरदार पर काम कर रहे हैं, अपने अखलाकियात पर काम कर रहे हैं, अपने रब की समझ पे काम कर रहे हैं। खैर, ये मुझे नहीं पता कि ये समरीन ने किस वक्त कहा था, इंग्लिश इज एवरीथिंग, इट जस्ट पॉप्ड अप, सो आई हैड टू आंसर टू दैट। Deschooling, this is the last thing that I'm going to say, that you need to do deschooling. और deschooling का मतलब क्या है? Deschooling का जो process है वो कि where parents and students detach themselves from learning the mindset of formal schooling system by taking a complete break from the school routine designated subjects and grades and standardized testing. This is sometimes done for transitionary periods to unwind and reorient themselves. ठीक है? तो डी स्कूलिंग का मतलब ये है कि आप टेबल, डेस्क, क्लासरूम, टीचर के बैठने, उठने, डांटने की वॉइस से बाहर निकलें और अपने आप को समझाएं कि लर्निंग हैपन्स ऑल द टाइम। लर्निंग आपके इर्द गिर्द हर वक्त चल रही है। अच्छा, प्री स्कूलिंग में 2-3 मेथडोलॉजीज़ हैं जो यहाँ पे प्री स्कूलर्स यूजुअली यूज़ करते हैं। और उस मेथडोलॉजीज़ के हिसाब से बच्चों को सिर्फ ये नहीं सिखाया जाता कि पेंसिल होल्ड करो और पेंसिल लिखो। मैनिपुलेटिव्स होते हैं, आप सैंड के ऊपर आप लिखें, आप पेंट के साथ लिखें, आप फिंगर पेंटिंग करें, आप पेपर क्राफ्टिंग करें, जो चीज़ें बेसिकली नर्सरी में सिखाई जाती हैं ताकि उनके मोटर स्किल्स भी एनहांस हों। ऑफ कोर्स उनको बहुत ज़्यादा हमारा फोकस होता है कि पेंसिल पेपर से लिखो। उसकी वजह ये होती है कि हमारे स्कूल सिस्टम में रश है कि बाय किंडरगार्टन बच्चे को ठीक ठाक लिखना आना चाहिए, एंड बाय फर्स्ट ग्रेड हम उसको इतना होमवर्क और इतना क्लास वर्क देते हैं जो कि लिखने का काम है, जिसकी बेसिक नीड ये है कि बच्चा अपनी जगह से उठ ना सके। ठीक, हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं थिंकिंग को, हम ब्लॉक कर देते हैं इमेजिनेशन को, हम सफोकेट कर देते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन को। अगर टीचर की इंस्ट्रक्शन से बाहर कोई काम हुआ है तो वो काम एफ है, फेल्ड है। There are very few teachers who recognize an expression and impression who allow. टीचर सारे recognize करते होंगे, लेकिन allow कितने करते हैं? As a parent, when you're a homeschooler, you are going to deschool yourself from that mentality, and you're going to allow your child to express themselves through their art, through their writing, through their painting. आप सीखेंगे कि कहीं पे भी दुनिया में ये फिलॉसफी नहीं है सिखाते हुए कि बच्चे को पहली दफ़ा से जब आपने लेक्चर दे दिया उसके बाद उससे सारी पंक्चुएशंस भी अज़बर ज़बानी हिफ्ज़ हो जाएंगी, उससे सारी राइटिंग नीड्स भी उसकी सारी हो जाएंगी। देयर आर चिल्ड्रन, एंड साइंटिफिक प्रूफ्स हैं कि देयर आर चिल्ड्रन who until the age of probably even 10 take time to read, take time to understand. I'm not talking about dyslexia, I'm talking about just जनरल टाइम। हर बच्चा अपने टाइम लाइन पर होता है, हम उसे रश करते हैं, और जब वो हमारे साथ भागना नहीं लग जाता या जब वो अपनी पूरी क्लास के साथ नहीं भागता तो हम उसे डिलेड स्टैम्प कर देते हैं या हम उसे निकम्मा, नलायक, निकट्ठू स्टैम्प कर देते हैं, जो कि उस बेचारे बच्चे का कसूर भी नहीं है, कसूर उस सोसाइटी का है जो उस बच्चे को उसके टाइम लाइन पर ब्लूम ही नहीं होने दे रहा। ऐसा ही है जैसे कि एक फूल है, उसके ऊपर आप केमिकल छिड़क के भाई तुमने इतनी देर तक फ्रेश रहना, उसके बाद जब वो ब्लूम ही नहीं हुआ, वो वैसे अपनी फर्स्ट स्टेज में वो ब्लूम नहीं हुआ, वो बड़ा स्टिफ सा रहा, वो ऐसे लगा जैसे बड़ा ही खूबसूरत है, और जब उसके ब्लूम होने का टाइम हुआ तो इट बेसिकली डाइड। इट नेवर bloomed, it never gave that fragrance that it was supposed to give. There was no natural formation of that flower or even of the fruits, like how we use them and how we grow them chemically. That's exactly what we've done to childhood. We've basically manipulated the childhood. Kianat Naqvi says she's not interested, or the child is not interested in writing. My son is 6 years old and I'm homeschooling him for almost 2 years, but he is not. अच्छा, कोई बात नहीं है, आप उसको होम स्कूल कर रहे हैं, अब वो 6 साल का है। कयानत, प्लीज़ आई वुड सजेस्ट दैट यू रीड अप ऑन चिल्ड्रन। गूगल करें, मेरे पास इस वक्त वो नाम नहीं एग्जैक्ट आ रहा। 6 साल का बच्चा जो है
अच्छा, जूली बोगार्ट, look up Home Alliance with Julie Bogart और उनके free articles पढ़ें. She gives even I follow her homeschooling articles, and one of the things that she talks about, and she has homeschooled all her 5 children, और उनके सारे बच्चे जो हैं माशाल्लाह वो ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो adults हैं और अपनी अपनी लाइफ में प्रोफेशनल्स हैं, राइट. और ऐसे बहुत सारे आपको होम स्कूलर्स मिलेंगे. 6 साल का बच्चा हमारे स्कूलिंग सिस्टम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी पूरी कॉपीज लिख देगा, राइट. एंड आई कैन टेल यू, अगर आप अभी इस वक्त पोलिंग करा लेना कायनात के 6 साल के बच्चे कितने बच्चों को लिखने का शौक है, शायद 100 में से कोई एक बच्चा होगा. All of those kids are basically crying their eyes out and their heart out to their parents and their teachers that we don't want to. Our teachers are frustrated because, and teachers are continuously, and please let me know, okay, is it true or not? And the teachers are continuously frustrated of that 6-year-old child unless that child is really, really like focused. And these are very seldom less children. क्यों हमारी क्लास में सिर्फ 3 ही फर्स्ट पोजीशंस होती हैं? ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है. क्यों हम बाकी सबको एक लाइन में और एफ तक लेके जाते हैं, CDEF? Why? Because children are at different points. A 6-year-old, a 5-year-old is not strategically or psychologically or even scientifically research based, are not necessarily ready to write. It will take them time. Maybe that child of yours by the age of 10 will be able to write more. Apart from writing, give them other forms of learning. Now this is a totally different lecture कि हम किस तरह से कर सकते हैं. So I won't go into that. I was just going into the deschooling, and deschooling is one of the things that we as parents need to do. And what's the first step to start? The first step, like Sadia Yunus, I'm saying, the first step is basically learn about your learning styles and go over your limiting beliefs and talk to your children. Communication. If you are going to, and if your children have been going to school, तो please communicate करें उनके साथ कि आप किस तरह से चाहते हो अपने होम स्कूल का, आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हो. हाँ, the school, yes. बिकॉज जाहिर सी बात है, स्कूल को क्या चाहिए? स्कूल को स्टूडेंट्स चाहिए. क्यों चाहिए? उनको स्कूल चलाने के लिए स्टूडेंट्स चाहिए. मैं आपको यहाँ पे आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे होम स्कूलिंग आई थी इन द 1970s and it was a huge revolution and there's a whole history behind it. Read John Gatto, read John Holt, read all these people, read Maria Montessori, read Charlotte Mason, read these people who basically 18th 19th century के भी हैं. Read the classical teaching method जो basically हमारे दीन से बहुत ज़्यादा related है, the Greek classical method जिसको कहते हैं, लेकिन it is basically teaching children virtue. अदब यानी कि सबसे पहले अदब, और उसके बाद उनको नॉलेज देते हैं, और उसके बाद उनको रेट्रिक देते हैं कि नॉलेज को आगे लेके कैसे जाना. These are all different lectures. I cannot combine everything here in one, right? However, I'm telling you, schooling systems were made to not dumb down the children, but to conform. Conformity के लिए बने थे ना. Schooling system आया क्यों था? ये World War II के बाद, मतलब कि ये ज़्यादा World War I के बाद basically, और ये आया था कि जब Industrial Revolution आया था. And this is a short synopsis of why schooling system basically came into place. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया था कि जब उनको इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग चाहिए थे, तो उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, जो उस वक्त मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ मनी जिनके पास था, जो इंडस्ट्रीज सेटअप करने वाले लोग थे, and they brought in psychologists and they brought in scientists and they said, if we conform the human mind to thinking in a particular way, only then we will be able to help the state grow. This was all about helping the state grow, confirming the minds into industrial packaged human beings so that they could conform. There's a very good book which I would be doing a review on. Actually, review नहीं, मैं उस पूरी book को discuss करूँगी, The End of Average, In Shaa Allah, and I will do it and I'll put it up on my YouTube channel, Parenting Uncomplicated. Do look me up on Parenting Uncomplicated by Iram bin Safia. I do a whole lot of YouTube videos about homeschooling, about education, about basic positive parenting. Khair. So that is why the schools have come to believe that only the school, and the school will give you the message that only the school can teach a child, a parent cannot teach a child. जबकि बड़े मजे की बात है कि जो स्कूल के अंदर जो टीचर है वो भी एक पेरेंट है.
तो ये कैसे कि मतलब इसका क्या मतलब हुआ? Does that make sense? जो स्कूल के अंदर टीचर है वो भी बेसिकली घर में पेरेंट है और वो बाहर स्कूल में किसी और के लिए टीचर है, लेकिन आप चूंकि एक पेरेंट हो तो चूंकि आप उस टीचर के पास अपने बच्चे को नहीं भेज रहे इसलिए आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हो. No sense, right? You as a parent are the first darasgah of your child. You with all your abilities are able to teach your children, are able to homeschool. Homeschool does not have to look like an A grade paper. It can be a B, C, D, E, but it can be the love of your child's life. They can be so happy, so more confident, so more intact with learning of adab, of building character, of understanding. They can be so much secure in their social sense of being, in their individual sense of being, because you're teaching them how to love themselves and how to love Allah subhanahu wa ta'ala and how to love learning. ये वो बच्चे होंगे जो शायद अपनी, मैं ये नहीं कहती कि सारों को किताबें पढ़ने से मोहब्बत हो जाएगी, ये सारे के सारों को लिखने से, any e-audio book that you can recommend, लिखने से मोहब्बत हो जाएगी. Right now, on the top of my head, I can't think of anything, but then again, listen to podcasts. One of the podcasts that I highly recommend is Julie Bogart, right? Listen to her podcast, because that is the one that I use regularly for my own homeschooling. So that's the one that's coming to my head, but there are many other. There's Sarah, she does the Charlotte Mason method, read aloud. Google read aloud by Sarah. मुझे last name नहीं याद आ रहा. Listen to her podcasts even. अच्छा, the Sarah podcast is a bit of Christian based, but basically जो उसकी जो foundation है वो बहुत अच्छी है. And for early childhood homeschoolers या उनके बच्चे जिनके nursery से लेके 5th grade तक के जिनके बच्चे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी होगी. I should have actually, I didn't know that question would come up, but because this was not the part of today's life. However, Julie Bogart or Sarah something है, उनको listen करें read aloud के topic पे. Do listen to those podcasts. There aren't e-books इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही हैं. The last thing was deschooling, and I've really lost my thought of my thought of train because I started to answer those questions. Okay, this is the last example. Did she say that this is a parent who's talking about deschooling herself? The reason that the most parents take their kids out of formal, ये बात please सुन लें आखिरी और फिर इसके बाद हम इस life को ख़त्म करते हैं. The reason that the most parents take their kids out of formal institutionalized schooling system is because they are dissatisfied with some of the system and want to offer their children something better at home. स्कूल में बुलिंग होती है, स्कूल में इंतहा की बहुत सारी गंदी बातें बच्चे सीखते हैं. अच्छा, मैं गंदी बातें करके इसको बड़ा ही मैंने अजीब सा एक वो दे दिया. बहुत सारी वो अदब सीखते हैं जो आपके घर की वैल्यूज से बड़ी डिफरेंट होती हैं, राइट? स्कूल में बच्चे वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं या एक दूसरे पे रब ऑफ करते हैं. पीयर प्रेशर इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. हम औरतें इस एज में आके पीयर प्रेशर में रहती हैं कि मेरी फलानी दोस्त ने ऐसा, वो मुझे कहेगी क्या. होम स्कूलिंग का 80% बर्डन ये है, वो मुझे क्या कहेगी या वो मुझ पे हंसेंगे. So if you and I at this point in our lives where we have been mothers for a certain period of time, we are scared of what the other person is going to say. Another person is going to point me out and going to laugh at me. तुम्हारे तो कभी स्कूल में नहीं ग्रेड अच्छे आए थे तो तुमने बच्चों को पढ़ाना है. ये मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. Because I was never the first position taker or the second position taker or even the third. Actually, I was never even 10th in my class. And if I tell you my FSC results, may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on my mother who was very kind to me. Kuch nahi kaha unhone mujhe. And alhamdulillah, I completed my undergrad just a few weeks ago in teaching. And my whole entire family, मेरे husband, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरी वालदा, मेरे बच्चे, मेरे तीनों बच्चे और मेरी होम स्कूलिंग कम्युनिटी जो थी, उन सब ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं पढ़ो. So at the age of 38, I just turned 38. At the age of 38, I completed my undergrad in teaching. Because learning never stops. At the age of 38, I'm still studying Quran Tafsir. I'm enrolled in many Islamic classes and Hadith sciences classes. I'm enrolled in many courses. I'm continually studying and मेरे बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं. It's not because I'm not interested in other things in life. It's because I recognize my purpose in life. You have to recognize your purpose in life. And you have to recognize कि अगर Allah subhanahu wa ta'ala ने हमें बच्चों
हेल्थी बच्चों की नेमत से नवाजा है। मैं उन मदर्स को सलाम करती हूँ जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं, जिनके बच्चे जिनके बच्चे, जो माएँ अपने बच्चों को सारी जिंदगी, और उनको यही डर रहता है कि मैं अगर चली गई तो मेरे बच्चे को संभालेगा कौन, बट एवरी सिंगल डे दे वेक अप विद द दुआ कि अल्लाह कोई मुआवजा दिखा दे या अल्लाह कोई आसानी कर दे। और अगर मैं और आप ऐसे बच्चों की माएँ नहीं हैं और हम समझते हैं कि होम स्कूलिंग से हम अपने बच्चों को एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बना सकेंगे, एक ऐसी शख्सियत बना सकेंगे जो कि अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो कि अपनी प्रेजेंट, वो बच्चे अपनी प्रेजेंट जनरेशन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए कोई अच्छा काम कर जाएंगे, तो बी इट, वी शुड डू इट। माई यूट्यूब चैनल इज on YouTube, Parenting Uncomplicated, and my blog is www.parentinguncomplicated.com, and you can follow me on Instagram as well. It's Iram bin Safia _spark_inspire, and there's a Facebook page, Iram Shaka, through which I'm coming on live, but there is a Facebook page for Iram bin Safia as well. In Shaa Allah. So you have to realize that why is it necessary for you to deschool your children? The biggest challenge for homeschooling parents is moving away from simply bringing the school environment into a smaller form of their homes. According to the author, the unschooling advocate, Sandra Dodd, parents need to dismantle the framework on which they're hanging that they think they know about learning. As parents, we think we know about learning, and ये मैंने बात पहले भी कही थी, हमारी जितनी वो स्कूलिंग हुई होती है ना, हमें उस सब को इरेज करना पड़ता है, हमें जीरो से स्टार्ट करना है। और उसी तरह से आपका बच्चा ये देख रहा है कि आप उसको घर का स्ट्रक्चर दे रहे हो, आप उसको होम स्कूलिंग का स्ट्रक्चर दे रहे हो, लेकिन आपको अपने अंदर पता है कि आपने ये सारी चीज़ें सीखी और फिर आप अप्लाई करो। इट्स बेसिकली something that you are doing on the go. You're learning and you're giving. You're learning and you're giving, and it's a beautiful combination. Jazakallahu khair for everybody's time. I hope that I was justly able to give the topic in the time I did. Thank you for your presence and for listening to it, and inshallah the admins will be doing a poll, I believe, so that मतलब वो पूछ सकें कि आपको कौन से टॉपिक्स के बारे में जानना है। If there are certain topics that you all are really interested in learning about and hearing about, please बताएं अपने admins को, ताकि next time जब मैं online आऊँ और live पे, which I will be coming regularly, actually bi-weekly I will be coming live on this channel, I would love to talk about something that you want to hear about rather than something that I bring to you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallah khair once again. Iram bin Safia signing off.